Hello, Ishani. Hello, hello. কৰিছোঁ ৰ'বা। Okay. PPT চবে দেখি পাইছে চাগে? I hope everyone the PPT is visible to everyone present here. Oh, okay. Okay, I'm audible as well. I am guessing I'm audible, right? Okay. So hi everyone. Good evening, and I welcome you all to this event of Solutions Challenge 2025 with Build with AI. This is one of Google's GDG on-campus programs biggest events, even bigger than the Gen AI and the Cloud Study Jam event that happened previously. Here, everyone is allowed to participate and solve various problem statements from various sectors that help us build a better tomorrow. It is not limited to the members of the campus club at all. We will get to more details later on, but for now, let me hand over the mic to our tech team member with specialization in game dev, Kapil Azan, who will tell us everything about the event. Kapil Azan, you can take over now. Hello, am I audible? Yes, you're audible. Okay, so good evening, everyone. As Will has already stated, that this is another event hosted by GDG on campus called Solution Challenge, and today's info session is all about what Solution Challenge is, why is it necessary, how to register, and all that stuff that will go into details. So let's get started. Shani, we can go to the next slide. Okay, so first let's start by addressing what Solutions Challenge really is. It's an event organized by GDG on campus in collaboration with Hack to Skill for student developers from various colleges and across India, universities and colleges across India. So what Solution Challenge is that all the participants are required to submit any project that may be helpful to a social problem or any social field which requires attention regarding AI and Google tools, such as in education department, healthcare, sustainability, etc. In these, our aim is to solve particular problems related to these fields. So student developers not only gain invaluable skills but also contribute to making a positive impact on society. So this is about submitting projects that will be helpful in real time. It will be helpful for society as well. So let's go to the next slide. Theme for the challenge. So uh, here there are various themes that focus on leveraging AI and other technologies to address real world challenges. All the themes will be provided to you, aligned on themes for social good. The solution challenge revolves around solving real world problems using Google developer technologies. All the themes that we have that are related to the fields like education and healthcare, etc., they will be given to you later. We will talk about that later, about the themes. So let's get to the next slide. Ah. So the themes for the challenge are all these are the themes: no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education. The project that has to be submitted has to be based on one of these themes, and uh, and all of these themes have problem statements. What problem statements are, we'll address that in a different session. And this these themes are basically what we'll be working upon. All the participants that will be working. So, yeah, next slide. Next slide.
So who can participate? GDG on campus student developers from GDG on campus or non-GDG students too. If you are on campus, then it's no problem. You will do it under our chapter. If you are non-GDG member, then they can contact their nearby GDG campus organizer, and they can participate under active organizer chapter. That is pretty straightforward. We'll go to the next slide. Okay, now why we need to participate. So there are four basic reasons why we need to participate in this. First is tackle real world issues, solve issues on health, education, healthcare, and environment using cutting edge AI tools. We know that there's a lot of problems still unsolved and unfaced in all these fields. So we try our best to come up with a solution to at least some of them. Network with like-minded people. This will help in our growth, and also it'll help in all. It'll help in collaboration and ideas because like-minded people share ideas. Excuse me, Kapil. Uh, Sorry to interrupt. yeah. Your voice is cracking in the between. It's not clear. মানে অকণমান এনেকে Oh, হৈ গৈছে অকণমান তোমাৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আই গেছ network to ঠিকে আছে ঠিক আছে তেন্তে এবাৰ ৰিপিট কৰি দিবা ষ্টাৰ্টিং এইটো পাৰ্ট A part two, no? হয় এই পাৰ্টটো Okay. So why we need to participate? There are four basic reasons why we need to participate. First is tackle real world issues. Education, healthcare, a department board no mane বহুত এনেকুৱা issues আছে যোনবোৰ এতিয়াও unsolved হৈ আছে, which are unfaced, and we at least we can do something to solve at least a little bit, some of them, if not all. Then next, the network with like-minded people. We can connect with student developers to share ideas, collaborate, and grow together in solving impactful challenges. As it will help in connecting with other people and coming up with even better solutions like that. Upskill and build solutions. Learn and implement solutions to gain the confidence to solve problems using technology. Obviously, you'll gain skills after doing such projects. Your school, the gap between what your skills were and what they will be after you do that, that will be a huge gap, and so it will be help you improve on your skills as well. And recognition, obviously, if your solutions and your projects are uh, if they stand out, যদি ভাল একদম মানে চকুত পৰাকে আহিছে বস্তুটো, then obviously you'll get recognition, and you and okay, it was a bit shaky. Okay, okay. I hope it's better. I hope the voice is better now. So numerous opportunities for quality solutions. Key focus on AI. So yeah, like I said, recognition is also a big part of why you should participate. So next slide. Okay, registration is free. Teams of 2 to 4 members. So minimum members can be 2, maximum can be 4. A participant can only join one team, of course, and participant must be of 18 years or older and should be enrolled. That is, everyone knows that. Will you know, মাজে মাজে অকণমান এনেকে হৈ যায় তাৰপিছত আকৌ ক্লিয়াৰ আহে আকৌ অকণমান হয় কৈ থাকাচোন বৰ ক্লিয়াৰ আহিছে কৈ গৈছো শুনিছোঁ বাৰু, যদি বেছি যদি প্ৰব্লেম দিয়ে ক'বা। অ'কে মই জনাই দিম Okay, now submissions and guidelines criteria. One team only has to submit one project regardless of their number of team members. So since এটা theme লৈছা সবে, so solution to হেতু এটা theme ওপৰতে solution হ'ব, আৰু obviously project এটাই হ'ব per team. And all project submissions documents must be in English, obviously. Next slide. Okay, so this is the timeline for the campaign.
all the dates are given here. Um, Registrations, we have time from 6th Jan to 6th March 2025. All registrations will be completed in this 1 month. Sorry, in these months. And then comes virtual training sessions. এতিয়া আমি সেই projectsবোৰ যাতে তোমালোকৰ help হয়. So we'll be doing like workshops. All these workshops will be based on solving how to do those projects, and after we do those projects you will be able to build them on your own. So those will be the virtual training sessions which will start on 13, uh, uh, which will be 28th Feb, 13 Jan to 28th Feb. So these times may change, timelines may change, don't worry about that. So next is project submissions. You will have to submit the projects to us, and within we'll give a time. Then on that time you have to submit those projects. Then project evaluations will take place, and then initial shortlist announcement. That will be the top 100 projects that are selected for uh, to get the prizes and awards. Then virtual mentorship and prototype submissions. These submissions will also will have detailed discussions on what that will be. Prototype submissions, the working models or what all that you'll make, you'll submit those. Then evaluations will take place, and final shortlist announcement, that is top 10, will be announced. That will be announced in June. That is bahut derike hobo aru. We have to worry about that later. So next slide. I think next is for the registrations only. Exciting campaign prizes and rewards. Yeah, the winner will get about 2 lakh rupees. First runner up is 1,50,000. Second runner up 1,25,000. Then we have special categories for category 1 and 2, 75K each. So these are the prizes that we can win if we do good enough. So next slide. Certificates for participation. Digital certificates of appreciation will be awarded as below, recognizing efforts of. So these are the things that will be awarded if you just participate. So participation certificate pawa, and project submit korle successful project submission certificate pawa, top 100 or top 10 or to assay separately. So that will be a separate thing of its own. You will get certificates for those two. So next. Now registration phase. Now itia registration or gute bostu to know. So what we have thought that in this session, if we go into too much detail, bahut dighol hoy jabo. So registration or just moi upore koi dim, and in another session ami just registration or karne thom. All your doubts, all your queries about the registration process will solve and show you how to do it in real time in that next registration info session. So yeah, just my upor query. So you have to register as an individual. Although as team members, as a good solutions challenge, so you will be 4 teams, but you all have to register as an individual also, but not as a team. So one person has to register as themselves and then select their teams. It's like that. So brainstorm on given problem statements. Problem statements provide kora hobo. He problem statements kini karne ami eta extra session lom. Ekhini explain koribole like what they are and what they have done. Next is create dev profile link. Dev profile link ka karne link eta dia hobo. Like in GenAI event, sobe korisile skills boost account eta kholisile. So how you had to make that skills boost accounts and then make it public and then share it. It's the same thing here. You have to make the dev profile link, make it public and share it. We'll go to the registration phase of the portal, so we'll clear that up in detail in the registration session. Then verify your GDG on campus chapter. Our Dibrugarh University chapter to verify korbo lage, and form a team of 4 members. Agote kolu. You have to form up to 4 members, minimum 2, maximum 4. So next slide. So registration details are these. GTA registration korbo java, then able fill out korbo full name, address, contact number, state, city, etc. Able koriba. You can do it on your own. Next slide.
So GDG on campus verify hey verification to আমি দেখাই দিম কৰিব লাগে university হয় বুলি that will be all done in the registration session. Next slide. Okay, connect with local developers. When you join a Google developer group, you have the opportunity to learn new skills in a variety of formats. You also meet local developers virtually or in person with similar interests in technology. Of course, this whole community is based on people who are who are founded on developing, and like when you meet people like them, your skills can only grow. So there, of course, you will connect with local developers while doing these projects, and it will be of even more greater help to you when you do. So next slide. Search. Okay, so this is the complete guide on how to register. So search for the city or country or region where you, in our case, it will be Dibrugarh University. Next slide. So Dibrugarh, just type in Dibrugarh and you'll see Dibrugarh GDG on campus, Dibrugarh University. Click on that. So next slide. So GDG on campus Dibrugarh University. You'll see that this should be on joined already. So next slide. You see that it is already joined. Then here you will be asked to fill out some more fields, stream, specialization, pass out year, all that you have to fill out. Then dev profile link. That dev profile link that will show you in brief right now how to make. Yeah, this is the registration form part. So next slide. Next I think is the dev profile link. Yeah. For the dev profile link, you have to go to developers.google.com, then sign in with your Google account, and there will be a basic field fill up prompt during the setup. Complete the profile setup. Your profile will be created. Then next slide. To get the dev profile link, just click on the three dots on the top right corner and select profile. The dev profile link is located below your profile name. So some might see set web custom address. This means the profile is still private. The most important thing here is you have to, after creation of the dev profile link, you have to make it public, just like in the Skills Boost account. So yeah, just in a proper code issue, profile link you to hey set custom web address at click korwa. It will directly direct you to the profile to public dialog box, and you have to just click on the public option and save it. Then you have to copy paste the dev profile link and you have to paste that on the registration form that was shown previously. Next slide. So you can see the red circle on the settings option. Just click that. Then next slide. Okay, then edit profile. Go to edit. So you can see that here it's private. Your profile is only visible to you, so you have to change that. So in edit profile, you have to go and change settings. Next slide. So here you can see you have an option to radio buttons for public and private. Just you have to just select public. Next. Then take this link, copy this link on your browser, on your browser search bar, copy it. Then next slide, you have to paste it. Yeah, you can scan the QR code to get your solutions challenge badge. You can, after getting this badge, you can either post it on LinkedIn or any social media. So you can show off your achievements like that. Next. Okay, submission phase. We'll not touch upon this right now. We'll have a completely different session for this, how to do everything, how to build your project, finalize the problem statements, etc. All that. We'll talk about that later. Next slide. Okay, those top 100 or shortlisted teams. Top 100 teams will get access to a mentor pool.
Uh, Refine your projects based on the feedback received from experts. Final submissions of the project, including that prototype link, video of 3 minutes, and GitHub rep. Okay, the last point, I'll just touch up on it. The last point, the project that will be submitted, you will submit the prototype link of your project, whatever your project is, and you have to make a video of at least 3 minutes describing how what your project is, what theme you've chosen, what is the problem, what is the solution, and how your project is the solution to that problem. And also you have to post it on GitHub and share the GitHub repo of the code that you used in your project. So next slide. So top 10 teams will get shortlisted for the grand finale and will be invited for an exclusive event. Yeah, if we get selected in the top 10, then of course the prizes will be huge. Top 10 teams will receive one-on-one mentorship from experts. You'll be directly under all the coding experts uh, that will help you in future establishments and all. So top 5 winners will be announced in GDG as whole. So next slide. Project submission, I already said some things, but we will have, as I said, detail में जाएंगे बाद में. So let's go to the next slide. Okay, so additional points for using dual developer technology. You'll use all these tools, Gemini APIs, IDX platforms, Vertex AI, all of them will be available to you for your projects, and we'll train you how to use them on our workshop sessions. So you don't have to worry about that right now. And Google, yeah, I'm also includes Google Cloud Platform. You get it like the Gen AI event like you had. So next slide. Language and platform compatibility. Google Developer Technologies, your solution will be given extra credits if you use these tools, Gemini APIs to integrate AI, IDX platform. Your solution will get extra credits. In turn, you are more likely to be shortlisted for the top 100 or even the top 10. So language requirements, all material, of course, you have to submit everything in English. And the focus of this hackathon is to develop AI solution that positively impacts society. Your submission should clearly highlight how your project aligns with this objective. You have to explain that on your 3-minute video, how your project helps build a solution for the society and societal problems. So next slide. Functional prototype. The functional prototype is the actual project that you made that works in real time. So top 100 teams will be shortlisted. Gen AI tools, if you use, you get extra credits. Sure, all these I mentioned already. Prototype should be functional and effectively showcase the real world impact of their AI solution. Yeah, you get the basic idea, of course. Same things are being repeated. So next, let's go. The final submission provide a functional prototype link based on the mentorship received from the industry experts. Yeah. This submission is only for the top 100 teams. That is, if we get to top 100 and we get the mentorship from the experts, then the prototypes that we make, those will be, the rules and criteria for these are given here. Public YouTube video or Vimeo video up to 3 minutes. Submit a deck that explains the prototype's goals, how it works, the technical implementation, and its real-world social impact. So this is the same thing, just the video will be public. It should be on YouTube. And a functional prototype link based on the membership from the industry experts. The same thing, you have to provide the prototype link. Next. Prototype submissions, evaluation criteria. Okay. This is how those project submissions are evaluated on these based on these 4 evaluation points. There is technical merit, user experience, alignment with cause, innovation, and creativity. Technical merit holds the highest percentage, that is 40%. On a technical merit, so what's the basic strength to that here? If your technical merit will be high, then chances are that
you'll perform good. So is your code well written, efficient, and maintainable? Of course, code readability is a big factor here. Can your solution be scaled for wider adoption? So as basically bugs থাকিব নালাগে আৰু it should work for a lot of different types of inputs, the wider range of inputs. How effectively and creatively did you integrate Google Developers? Yeah, of course, I told you Gemini APIs, GCP, and IDX. Ekta keneke use korisa, hekitaও চাব. So then user experience, ease of use, user into interface hobo. How is your solution simple to navigate, accessible, and user friendly? Of course, যদি user friendly নহয়, then of course it won't have much popularity or relevance. থাকিব লাগিব. So user interface ভাল হ'ব লাগিব, relevance to the problem, যোনটো থিম লোৱা হৈছে সেইটোৰ লগত সলিউশনটো এইটো হৈছে নে নাই, কিমান সলভ কৰিছে সলিউশনটো, এইটো চাব. 25% is based on that. And creativity and innovation, 25% is based on that. Is your solution to unique হয় নে নাই সেইটো চাব basically. So next, the top 10 teams will be invited to the finale. Top 10 teams will pitch their idea to the jury. Yeah, and top 5 winners will be announced. এইটো বহুত পাছত top 100 to হ'ব, তাৰপিছত top 10 to হ'ব, তাৰ পিছত গৈ পেলাই হ'ব. That will go around June, July লগে পাই যাব লাগে বস্তুটো. We'll worry about that later. So next. Okay, why attend the bootcamp? You boost your chances into top 100, of course. Expert guidance, skill enhancement, expand your network. Already ক'লোৱে মই. The second slide খনতে আছিলে. So you know all this. Next slide. Unlock exclusive intro membership. All this is also stated at the offline bootcamp. So, okay, we've got this. Next. How to participate for in the bootcamp? Register for the solutions challenge. Select a problem. এইবোৰ আমি কম problem statements কথাও কম বুলি কৈছো. Solution presentation confirmation কাৰণে wait কৰিব লাগিব, then attend the bootcamp. All this will be even in the আমাৰ যোনবোৰ workshop and training sessions হ'ব ন, তাতো in detail explain কৰা হ'ব যে what you have to do. So next. So the bootcamps will take place in multiple cities with exact locations announced closer to the dates. So they will be announced later. Next. Points to remember, bootcamps are invited only, limited to participants from India. GDG reserves the right to invite shortlists and confirm participation. Yeah, these are for the bootcamp. These are the criteria for the bootcamp basically. No travel or accommodation will be provided for a shortlist program. Only one team member can submit and attend the bootcamp. So out of all the teams, just one member bootcamp to কৰিব পাৰিব. After you can still submit your project for the top 100 solution evaluation regardless of bootcamp status. Yeah, bootcamp কি হৈছে কি নাই হোৱা, that doesn't matter. You can still submit for the top 100. And main thing to remember is only one team member can submit and attend the bootcamp. So next. So if those who are interested to participate in the bootcamp, we'll share this QR code, submit your solution before 16 February. You have to make the আগতে বনাব লাগিব ন, so বনোৱা আগতে দি দিয়াটো so মতলব নাই. So we'll first get into the details of the introduction part, then we'll share it with you. Next. Attend the offline bootcamp and stand a chance to receive a special surprise reward. Stay tuned. Okay, next. Support. Every support provide ho. Email support, social toolkit, virtual training sessions into Ami Korim, Discord for participants. Yeah, even Discords to discussions koro paru. If anyone is interested, we can set up one. So go next. For top 100 teams already called mentorship hobo, access to pool of mentors, prototype refining hobo. Next. So you can reach out to solution challenge support at hack to skill for any queries. So baki বস্তুবোৰ
organizers karne hoy. So let's go next. Oh, so milestones for organizers. So here amar চাৰিটা tiers থাকে, bronze, gold, silver, platinum. Bronze tier 100 students from campus registered for selection. এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনতে বহুত ডাঙৰটো এটা আহিব, যদি 100 ষ্টুডেণ্টছ হৈ যায় উই গেট ব্ৰঞ্জ টিয়াৰ আৰু 15 প্ৰজেক্ট ছাবমিশ্যন লাগিব। আৰু বিল্ড উইথ এআই ইভেণ্ট ৱাজ অৰ্গেনাইজড, ওৱান বিল্ড উইথ এআই ইভেণ্ট ৱাজ অৰ্গেনাইজড ৰিপৰ্টেড অন ইভেণ্টছ প্লেটফৰ্ম, জেন এআই ইভেণ্টটো হৈছিলে। চ' ইফ 100 ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিচিপেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যায় দেন উই গেট ব্ৰঞ্জ টিয়াৰ, 120 silver tier, same 15 projects, and top 100 or 5 projects যাব লাগিব, that will be the silver tier. Gold tier is even high, 120 হয়, 15 হয়, আৰু 10 project selection হ'ব লাগিব for the top 100. And platinum is the highest, 120, 15, and 10 projects, and এটা at least top 10 যাব লাগিব. So that's when we get platinum tier. That is the hardest to do, but we'll try our best. Let's go next. Okay, these are the rewards. So for bronze tier, it's 10 t-shirts, 30 stickers. Silver tier, 15 t-shirts, 15 badges, and 50 stickers. Gold tier, headphone. The stuff starts to get good from gold tier. So headphone, duffel bag, hoodies, badges, stickers. And platinum tier is the best. Samsung Galaxy Buds 2 Pro. You get one pair. And duffel bag, hoodies, badges, stickers. Next. So virtual training session, introductory session on the overview of the hackathon. So আমি অলপ লেটকে কৰিছোঁ, but doesn't matter. This is the introductory session. Then problem statement explainer session, eto ami korim pasot. We will explain to you what's the problem statement, what exactly is. And 3 workshop or master classes on Google AI tools, that also we will do. Workshops hobo, training sessions hobo, and you can join obviously. Next. So আমি এইবোৰ কেলে কৰি আছো? So to help society and help build a good future and provide solutions for all that is unsolved, right? So of course we are ready to make an impact to do all this. Let's go next. So এইটো same বস্তু হয়, repeated হৈছে. Next. Register. Okay, so to register karne registration karne QR code to hai, etu pasot diya hobo. Next. Okay, end of the presentation. So that was it basically. I hope bohutor 70-80% of clear hoise, baki juntu 20-30% ase in the coming sessions will clear it up perfectly. You don't have to worry about anything. We'll take care of all your doubts and queries in the registration part, just starting from the registration part to all the workshops and project submissions and everything. You don't have to worry about that. So as of this info session, post overview, if anyone has any doubt, you can ask. Okay. Hi. আৰু কিছুমান বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ মই। হেৰি ইছানে অকণমান হেৰি পিপিটিটো লগোৱা প্ৰেজেণ্ট। কিছুমান চেঞ্জেছ হৈছে দেই, মানে একেদিনত ধেৰ আপডেট হ'ল বস্তুবোৰ। চ' মই এইখিনি দেখুৱাই দিওঁ একেবাৰে ষ্টাৰ্টিঙলৈ ব'লা। ফাৰ্ষ্ট শ্লাইড, ফাৰ্ষ্ট গৈ থাকাচোন, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ। অ'কে, অকণমান হেৰি 8 নম্বৰ 8 শ্লাইড। অ'কে, আমাৰ যোনটো DSA ইভেণ্ট আছিলে, DSA ইভেণ্টৰ কাৰণে যিমান DSA ইভেণ্টৰ প্ৰিপেৰেশ্যন, মাৰ্কেটিং সেইচব কৰোঁতে মানে আমাৰ অকণমান লেট হ'ল। চ' এই গোটেই টাইম লাইনটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 6 জানুৱাৰীৰ পৰা। আমাৰ সেই DSA ইভেণ্টটো 12ত পতাৰ কাৰণে বস্তুটো বহুত লেট হৈ গ'ল। চ' তোমালোকে দেখিছা যে হেৰি টাইম লাইনটো মানে বহুত পিছ পৰি আছে আমাৰ লগত। আমাৰ GDG অন কেম্পাছৰ টাইম লাইনতো বহুত পিছ পৰি আছে। চ' এইটো এটা কথা। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো 6 মাৰ্চলৈকে চলিব, এইটোতো বাৰু হৈ যাব। আমাৰ ভাৰ্চুৱেল ট্ৰেইনিং ছেশ্যনবোৰ ইউটিউবত অলৰেডি আছে। আমি ইউটিউবত লিংক পঠিয়াই দিম, আৰু
project submission, project evaluations এইখিনি হৈ থাকিব virtual training sessions এইখিনি আমি পঠিয়াম in the group তাৰপিছত ইশানী next লাহে অকণ লাহে গৈ থাক পিছে পিছে next অকণ বেক ইয়াত জাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে ডেভেলপাৰ প্ৰফাইল ইউজ কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে নৰ্মেলি ৰেজিষ্টাৰ তাৰপিছত এটা ডেশ্ববৰ্ডত সোমাই যায় যে এইটো হেক্স টু স্কিল এতিয়া কাৰেণ্টলি দেখি আছা তোমালোকে হেৰি ইয়াত সোমোৱাৰ পাছত ডেশ্ববৰ্ডত ঢেৰ বস্তু ওলাই যায় যেনে ৰোড মেপ টিম মেনেজমেণ্ট ছাবমিশ্যনছ অ'কে মই এইখিনি বাৰু পাছত তোমালোকে দেখুৱাই দিম তাত যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিবা তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম তাত বাৰু চব ক্লিয়াৰ হৈ যাব অ'কে হেৰি কৰি ইশানী নেক্সট গৈ থাকা অ'কে অকণ বেগ যা পিছে সেই কিউ আৰ কোড নহয় হেৰি ফৰ বেকৱাৰ্ড পিছে যাও একদম পিছে অ'কে এইটো নহয় বেক গো বেক অ'কে এইটো হ'ল জাষ্ট এটা কিউ আৰ কোডটো গেট দিয়া এইটো সলিউশ্যন চেলেঞ্জ বেজ এই বেজটো মানে হেৰি তোমালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবা ফাৰ্ষ্ট ডেভেলপাৰ প্ৰফাইলটো উলিয়াই তাৰপিছত মেইন হেকটো স্কিল ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পাছত এই কিউ আৰ কোডটো জেনেৰেট হ'ব এই কিউ আৰ কোডটো তুমি তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিবা জাষ্ট টু শ্ব' অফ দেট ইউ আৰ পাৰ্টিচিপেটিং ইন দি সলিউশ্যন চেলেঞ্জ অন ডিফাৰেণ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছ তাৰপিছত নেক্সট গৈ থাক হেৰিত বোলা বুট কেম্পছ অ'কে নেক্সট বুট কেম্পছ হ'ল যে এতিয়া ইয়াত লিখিছে যে বুট কেম্পছৰ কাৰণে হেৰি সলিউশ্যন ছাবমিট কৰিব লাগিব কিন্তু হেৰি নতুন এটা গুগলৰ পৰা আপডেট আহিছে যে ইউ আৰ অল ইনভাইটেড টু দি অফলাইন বুট কেম্প we are excited to announce that the solutions challenge boot camps are now open to all registered participants so এতিয়া সেই যোনটো এটা কণ্ডিশ্যন নিচিনা দিছিলে যে 16 ফেব্ৰুৱাৰী আগত সলিউশ্যন ছাবমিট কৰিব লাগে সেইটো নাই এতিয়া বহুত ৰিকুৱেষ্ট অহাৰ কাৰণে সিহঁতি কি কৰিলে গোটেইটো ফ্ৰী কৰি দিলে জাষ্ট ইউ মাষ্ট বি এ ৰেজিষ্টাৰ্ড পাৰ্টিচিপেণ্ট অফ দি GDG অন কেম্পাছ সলিউশ্যন চেলেঞ্জ আৰু এটা অফিচিয়েল RSVP ফৰ্ম চেণ্ড কৰা হ'ব য'ত অফলাইন বুট কেম্পটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিবা তোমালোকে এইখিনি কলকাতা ডাঙৰ মেট্ৰপলিটন চিটিবোৰতে হৈছে বুট কেম্পকেইটা তোমালোকে বিচাৰিলে যাব পাৰা কলকাতা মুম্বাই হায়দৰাবাদ চেন্নাই তেনেকুৱা জেগাবোৰত হৈছে আৰু নেক্সট গৈ থকা হৈছে নে লাহে লাহে যাবা দেই অ'কে অকণমান বেগ যোৱা হেৰি য'ত ছাপৰ্ট ডিস্কৰ্ড চেনেল এটা তোমালোকক দিয়া হ'ব য'ত মানে তোমালোকে নেটৱৰ্ক কৰিব পাৰিবা ঢেৰ মানুহ থাকিব GDG বেলেগ ষ্টেট বেলেগ চিটিৰ অৰ্গেনাইজাৰ থাকিব গোটেই ইণ্ডিয়াৰ অৰ্গেনাইজাৰবোৰ তাতে আছে কিবা তাত থাকিলে চব সুধিব পাৰিবা আৰু এইখিনি ইমেইল হয় তোমালোকে কিবা ডাউটৰ কাৰণে ৰিচ আউট কৰিব পাৰিবা নেক্সট অ'কে ৱৰ্কশ্বপছ অ'কে ৱৰ্কশ্বপছটো অ'কে হেৰি কৰি দিয়া পিছুৱাই দিয়া পিছে ইটছ ডান এইখিনি ডাউট আছিলে চৰি মানে আপডেট আছিলে আৰু কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে এতিয়া ফ্ৰীলি সুধিব পাৰা if anyone has any doubts feel free to ask आयुष भैया अब कुछ कहना चाहेंगे आयुष भैया नहीं हम तो अभी आया है सॉल्यूशन चैलेंज कर रहा है ना कोई प्लान किया है कुछ तुम लोग टीम वीम का
अभी तक तो प्लान कुछ नहीं किया है, जस्ट ये इन्फो सेशन था अभी किस अच्छा, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट कब है? 6 मार्च। 6 मार्च में तो टाइम है। क्या मैक्सिमम टीम कितना चाहिए और मिनिमम? मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। ये इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रिलीज कर दिया? हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएगा वो ये जो हैक टू स्किल में रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे चैलेंजेस सेक्शन है, डैशबोर्ड में एक चैलेंजेस सेक्शन है, वहाँ पे सब ऐसा ये ऐसा क्या दिया हुआ रहता है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा। या फिर और एक भी सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि और आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है इस डैशबोर्ड पे, या जो आप लोग ने खुद निकाला, तो वो लोग भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हो ऐसे। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे करना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट टाइम से क्या डिफरेंस है अभी? क्या बिल्कुल सेम है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, एज अ होल इवेंट में क्या डिफरेंस? पिछले इवेंट से क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं, अम, पिछले साल का सोल्यूशन चैलेंज और इस साल के सोल्यूशन चैलेंज में कुछ मतलब डिफरेंस है? कुछ नया इंक्लूड किया है क्या? नया इंक्लूजन तो नहीं है उतना कुछ, एकदम पहले जैसा ही है। Okay. क्या बोलते हैं, यहाँ का जो चैलेंजेस है वो बदल गया है थोड़ा, और यहाँ पे जो बिल विथ एआई वाला अभी टैग लग गया है, मतलब आप लोगों को जितना हो सके एआई का यूज करना है, वो चेंज। और एआई का वो थोड़ा सा वो है क्या लिमिटेशन कि सिर्फ जेमिना यूज करना पड़ेगा या डीप सीक या फिर ओपन एआई भी यूज कर सकता है? लिमिटेशन वैसा कुछ नहीं है, आप लोग अगर यूज कर सकते हो तो अगर गूगल का टेक्नोलॉजी, गूगल का एआई जैसे जेमिनाई, जेमा, वो हाँ, सब का एपीआई अगर यूज कर सकते हैं तो मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलते हैं। क्योंकि गूगल का ही ये सिर्फ फ्री है, बाकी तो तुमको लोकली सेटअप करके रन करना पड़ेगा जितना भी एलएलएम है। हाँ तो वो है यूज हाँ। करने से तो जेमिना ही यूज करना पड़ेगा। जेमिनाई हाँ। अच्छा, फ्री क्रेडिट कुछ मिलेगा क्या? हाँ, फ्री क्रेडिट अभी मिलेगा ना आप नहीं, लोगों क्लाउड को। का नहीं, एआई का। आप लोगों को दोनों का ही, क्लाउड का मिलेगा, एआई का आई एम नॉट श्योर। अगर वहां पे रजिस्टर करने से आप लोगों को सब पता चल जाएगा एआई का मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एआई का ऑब्वियस शायद मिलना ऑब्वियस चाहिए बात मोस्ट प्रोबेबली। ऑब्वियस सा बात है, अगर एपीआई यूज कर रहा है तो हम 2-3 प्रोजेक्ट में गूगल का एपीआई यूज किया है, बट ऑब्वियस सा बात है तो 2-3 ट्रायल के बाद वो उसका फ्री टीयर खत्म हो जाता है। तो फिर एक नया ईमेल बनाओ, देन फिर से एआई एपीआई सेटअप करो, तो वो इशू होता है। तो हाँ बहुत। क्रेडिट अगर देगा तो बढ़िया है फिर तो। हाँ, क्रेडिट देगा, वही तो, ऐसा ट्रायल खत्म होने से झमेला होता है बहुत, क्रेडिट मिलेगा आप लोगों को। और किसी को कोई कुछ डाउट हो तो बोल सकते हैं, एनीवन, एनी डाउट्स? ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं हुआ है मतलब। ओके, 1 second, I didn't see the chat, sorry. Where is the chat? আমার জি হয়তো জিডিজি চ্যানেল দেরিকে স্টার্ট করা হয়েছে, বাকি ইভেন্টের টাইমলাইন কি নিয়ে ম্যানেজ করা হবে। সাবমিশন ডেট 16 ফেব, সাবমিশন ডেট 16th ফেব্রুয়ারি নহয়, 6th হেৰি 6th মাৰ্চ। সাবমিশন ডেট টু 6th মাৰ্চ লাষ্ট সাবমিশন ডেট, আছে ডেডলাইন মানে। অঁ, মেনেজ কৰিলাম মানে, গোটেইখিনি ৰেকৰ্ডেড আছে, ৰেকৰ্ডেড আছে কাৰণে মেনেজ হৈ যাব। জাষ্ট প্ৰব্লেম ষ্টেটমেণ্টটো ভালকে বনাব পাৰিলে হ'ল, একদম এম্পল এমাউন্ট অফ টাইম আছে বনাবলৈ। बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से बनाना है, फिर एकदम हो जाएगा अच्छा। Yes, other GDG members can participate without GDG। সেইটোৱে কৈছিলে, for non members who are not part of our current of the GDG on campus Dibrugarh, they can contact us, they can join us, মানে essentially they just have to open the browser, open our GDG on campus site and just press that join us button, and they are joined in our GDG on campus, and from that they can easily participate in the solution challenge. That's all. And if they have any more doubts, they can directly contact me from our GDG on campus site. That's, or anyone
कुछ और डाउट्स किसी को? Any in general doubts? आयुष भैया भी है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए। One second. आई डोंट थिंक सो कि हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, वो शायद वेबसाइट पे ही होगा अवेलेबल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा, किसी ने डीप सीक को अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल किया है क्या या रन किया है क्या बाय एनी चांस? शायद किसी किसी ने नहीं किया होगा, उसके लिए सिस्टम थोड़ा, हाँ थोड़ा रैम ज्यादा चाहिए होता है, राइट आयुष भैया? नहीं, उसमें बहुत सारा है, बहुत सारा वर्जन तो नहीं, बहुत सारा अलग अलग वर्जन ही बोल लो। किसी में 1.5 बिलियन है, किसी में 7, किसी में 4। तो डिपेंडिंग ऑन सिस्टम कैसा है, लाइक मिनिमम 1.5 बिलियन वाला तो चल जाना चाहिए, वो 1 GB का है। भैया हमने वो छोटा वाला एक मॉडल था ना इसका, मेरा मेरे को नाम याद नहीं है, वो हम ट्राई किया था। ओलामा ओलामा यूज किया जाता है ना इसके लिए। ओलामा यूज करके इंस्टॉल करना पड़ता है, हाँ। 1.5, हाँ 1.5 बिलियन वाला चल जाता है। चल, मे बी कौन सा है तुम्हारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मेरा मेरा 16 GB रैम और क्या बोलता प्रोसेसर है Ryzen 5 3500U। तो आराम से चलेगा, तो 7 बिलियन भी चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 7 बिलियन, अरे वो चलाने देता नहीं है 7 बिलियन के लिए, क्या 32 या फिर 64 GB रैम चाहिए होता है शायद। 7 बिलियन बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, ट्राई किया था वो इंस्टॉल करने नहीं देता है। अच्छा, हम एकदम छोटा सा मॉडल ट्राई किया था, वो चल जाता था अच्छा खासा। क्योंकि अब बहुत कुछ बनाना है लेकिन कहीं एपीआई फ्री मिलता ही नहीं है, बस जेमिना ही दे रहा है। हाँ, वही प्रॉब्लम है। वो एपीआई आप लोग, वो आप लोग एक काम एक चीज ट्राई कर सकते हो, गिटहब में ऐसे एपीआई सर्च करने से बहुत लोग रहता है, वो लोग अपना एपीआई से खुला फेंक देता है, मतलब गिट में एक एक सेकंड, वहां एक से सेकंड। चुरा सकता है। ये आदमी कल्याण मीट पे ना कॉल क्यों कर रहा है? कल्याण भैया हाँ मित्र है, कल्याण हाँ म्यूटेड पे मित्र है ना। एक सेकंड। और किसी को कुछ डाउट्स आप लोग फ्रीली पूछ सकते हो या फिर चैट पे लिख दे सकते हो, कोई बात नहीं। रजिस्टर या रजिस्टर करना पड़ेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स।
वैसे रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ से दिखा सकता हूँ, एक 1 सेकेंड। ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। Open innovation for a better tomorrow, lack of access to healthcare in okay. The healthcare related, growing crisis of e-waste, uneven access to quality education, overburdened teachers, something related to education, transforming logistics, lack of access to quality education, bridging the gender gap, empowering small and marginal to farming related, breaking financial barriers. Oh my goodness. Yeah. Revolutionizing voting with fast. Reviving the Indian crowd, bridging the gap for immersive, revolutionizing student education, tackling climate change, addressing educational gaps, leveraging AI to tackle rural to farming related education. This farming related, this is healthcare, accelerating drug discovery, building an inclusive world for neurodiverse individuals, safeguarding stories here for intellectual property protection. Okay, this is much like the अरे वो हैरी पर उसका नाम क्या था, মিনিষ্ট্ৰি পৰা হৈছিল চাকৰিকা বা সেই আৰু এটা ইভেণ্ট হৈছে, ইভেণ্ট নহয় এনেকৈ হেকাথন হৈছিলে যে নাম কি আছিলে আৰু SIH, স্মাৰ্ট ইণ্ডিয়া হেকাথন. If anyone has participated in that hackathon, I guess you all know it is very similar to that hackathon. Kind of hackathon হয় ক'ব গ'লে. Objective এটা দি দিয়ে. Disaster management, scaling, AI-powered detection of online harms. GenAI-powered financial assistance for better investing decisions. ভাল ভাল হেৰি দিছে, সেইখিনি ছাৰ নিজৰ মতে প্ৰজেক্টটো বনাব পাৰি. Monetizable projects. PS কি বস্তু? Okay, problem statement. Google Exchange. Okay, বুজিছো. GNA Exchange hackathon. Okay, আপুনি participate কৰিছিলে. hackathon हुई था कि participate करना आप लोग अच्छा है. I guess কাৰো doubt নাই চাগে. Like 1 second. Come on. I guess we can end the event here. Okay. Thanks for joining, everyone. I hope you learned like a lot about the solutions challenge event from Kapil. We will have more events on this, about the registration, about the problem statements, about the boot camps, about the workshops. Oh yeah, we'll have more events, not actually events, but we'll have kind of events about the AI, about how to leverage AI in order to solve the problem statements that I showed you earlier, and more stuff related to technologies. We'll have Google experts who will teach us everything about how to tackle these problem statements. So yeah, I hope you all had a great time learning about this event, and we'll see you next time. Okay, आप लोग मीटिंग यहाँ पे एंड होता है. Wait, Spotify देना था ना? Oh, Spotify winner. Okay.
हाँ, रुक जाइए आप लोग। श्रद्धा से बोरा स्पॉटिफाई विनर इस बार का। क्या बायसनेस है या क्या है, ऐसे ही दे दिया कुछ, क्या प्रोसेस है? बायसनेस नहीं, मतलब बहुत सब इवेंट पे वो उसको देखा है, मतलब प्रत्येक अच्छा इवेंट पे अच्छा, ज्वाइन होता है। तो जीडीएसी डैशबोर्ड। हाँ, जी जैसे हाँ, डैशबोर्ड, नाइस यस। नाइस यहाँ नाइस। पे भी, यहाँ पे भी मीट पे भी देखा है, मतलब। तो एकदम तालियां तालियां बजाए, तालियां। 3 महीना का प्रीमियम मिल गया भाई। एक्सक्यूज मी, सॉरी। और आयुष में आप कुछ बोलने वाले थे? मीटिंग यहाँ पे एंड होता है ना, आप लोग हाँ, रुक बोलने सकते हैं, वाला था आप लोग। कि वही डीप सीक सेटअप, फिर कल्याण फोन कर दिया, फिर वही बता रहा था कि वो सेटअप करेगा अपना लैपटॉप में, ऐसा कुछ। अरे डीप सीक, आप डीप सीक पे वो कितना बड़ा मॉडल है? डीप सीक का बहुत सारा वेरिएंट है, तुम सबसे बड़ा कितना 420 GB का है, ऐसा कुछ। अरे बाप रे। ओके, 420 GB। तो इनमें शायद 1 GB का है, लेकिन वही उसको उसको कंप्यूटेशन पावर ज्यादा चाहिए, स्टोव 1 GB 2 GB से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो वही। हाँ, श्रद्धा, ड्रॉप योर मेल प्लीज। श्रद्धा कोई श्री एआई बोरा। से प्रोजेक्ट, कोई एआई एजेंट या कुछ एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट कोई बना रहा है तो हमको रीच आउट कर सकता है, या किसी को एनेटेन यूज करने आता है, या फिर कोई क्रियो एआई यूज किया है, या कुछ भी एआई एपीआई यूज कर रहा है तो वो हमको बता सकता है। तो हम थोड़ा एआई रिलेटेड काम कर रहा था इन दिनों से। और आपने एआई के क्या क्या बोला आपने, एआई रिलेटेड? अभी थोड़ा एजेंट्स बनाया है क्रियो एआई यूज करके, और एनेटेन यूज करके 2-3 बनाया, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ओपन एआई का मैक्सिमम, अभी जैसे बहुत सारा फ्रेमवर्क्स है उसमें, जो भी मैक्सिमम फीचर्स है या मैक्सिमम टूल्स है, जैसे ऑडियो टू वीडियो ट्रांसकोडर या वीडियो टू ऑडियो ट्रांसकोडर, ये सब सारा ओपन एआई प्रोवाइड करता है। जेमिनाई या डीपसीक का ये सब नहीं है अभी अवेलेबल, तो उस वजह से प्रॉब्लम होता है। तो तुम कंप्लीटली कोई भी चीज बना नहीं सकेगा अगर अनटिल अनलेस तुम्हारे पास ओपन एआई क्रेडिट है, वही प्रॉब्लम आ जाती है। वो ओपन है, मतलब पूरा कंट्रोल करता है ना ऊपर से। ओपन एआई का मतलब, क्योंकि ओपन एआई बहुत टाइम से है, तो कोई भी फ्रेमवर्क अगर बन रहा है तो वो उसको कंसिडर करके बनेगा कि उसका सारा टूल्स यूज हो, तो उस वजह से ओपन एआई का सारा फीचर्स है। बट सपोज फॉर एग्जांपल तुम एक बॉट बना रहा है जिसको तुम टेलीग्राम पे वॉइस नॉट में कुछ भी बोलेगा उसको, देन वो तुमको, जैसे जैसे सपोज तुमको बोला कि आज मेरा ईमेल्स किसका किसका आया है, जो भी अनरीडेड ईमेल्स है वो हमको टेलीग्राम पे हमको दिखा दो, तो वो चीज कर देगा। बट इसमें प्रॉब्लम है, 3-4 स्टेप्स है इसमें। एक तो तुम्हारा पहले वॉइस को वो साउंड में ट्रांसपोर्ट करेगा, इसके लिए तुमको एक ओपन एआई टूल चाहिए। फिर देन ओके। वो एक एजेंट को भी एक एलएलएम मॉडल चाहिए, उस वहां पे इजी है कि एलएलएम को तुम जेमिनाई का एपीआई दे सकते हैं, वो फ्री है। बट देन अगेन कुछ कुछ बीच का प्रोसेस होता है जहाँ पे सिर्फ ओपन एआई का टूल्स ही एप्लीकेबल होता है, और वहां पे फिर एपीआई का सीन होता है, देन वैसे क्रेडिट नहीं है तुम्हारे पास ओपन एआई का, सो वही प्रॉब्लम। वो अभी समझ गया। ओ ऐसा बात है। मैं वो अगर एआई अगर जस्ट ऐसे अगर हम अप्लाई करता है ऐसे नोशन का, जो हम अगर आपको मतलब नोशन का एक पूरा क्लोन बना लिया, फिर उसमें एआई डाल के जो अभी प्रेजेंट पेज का जो कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट को टोकन जैसा घुसा के हम उसके उसका जो उससे रिलेटेड जो मतलब जो एआई का मॉडल घुसा है उस मॉडल को बोलेगा कि इसका ये कॉन्टेक्स्ट यूज करके हमको ये क्वेश्चन का सवाल, ये क्वेश्चन का आंसर निकाल के दो। सो वो कितना मतलब कितना अच्छा एप्लीकेशन होगा एआई का। अच्छा ही एप्लीकेशन होगा, और मतलब इन द सेंस कि जैसे अब हमको एग्जैक्टली पता नहीं इसमें कौन सा टूल यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर हम लोग कोई सा इंफॉर्मेशन वेबसाइट से स्क्रैप कर रहा है, तो वहां पे गूगल का टूल यूज होता है, सर्पर टूल ऐसा नाम है उसका। तो वहां पे एआई का काम नहीं है, वो एआई एलएलएम एक स्पेसिफिक टूल को यूज करके वो काम कर रहा है, इसको एआई एजेंट बोल रहे हैं हम लोग। सो वैसा ही सेम चीज नोशन में कर सकता है, अच्छा ही है मॉडल। तो ये इसको ऐसे भी कर सकता है कि लाइक
मतलब तुमको एक्सप्लिसिटली बोलना नहीं पड़ेगा एआई को कि तुम नोशन से ये चीज हमको स्क्रैप करके बताओ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। वो खुद भी अगर तुम बोलेगा कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ईमेल का एग्जांपल दिया था, तो हाँ अगर हम एआई को बोल रहे हैं मेरा जितना भी अनरीडेड ईमेल्स है वो हमको बता दो, तो वो जाके ईमेल स्क्रैप ही कर रहा है, बट उसको एक्सप्लिसिटली नहीं बोलना पड़ रहा है कि तुमको ये टास्क ऐसे परफॉर्म करना पड़ेगा, ये ईमेल ऐसे पढ़ना पड़ेगा। वो खुद ब खुद स्मार्ट इनफ है, वो पढ़ लेगा। ओके ओके समझ गया। ओके जैसे नोशन का वो ऑलरेडी नोशन पे प्रेजेंट है ना, वो एक साइड में कॉर्नर में दिखता है, लेकिन बहुत नोशन तो इतना यूज नहीं किया क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग लगता है हमको। हम हमेशा ट्राई किया यूज करना, बट 10 चीज दिखता है, हम फिर एस्थेटिक बनाने में चला जाता है, देन मेरा वही टाइम 4-5 घंटा चला जाता है। हाँ वही तो थोड़ा है, बहुत ऐसे घिच पिच होके रखा है। हाँ नोशन ये है, उसका नाम है सर्वे का बाद बट ये में। सब शायद नोशन एआई जो भी है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा, फ्री में तो हाँ देगा नहीं। नहीं देगा, बहुत वही 3 बार यूज कर सकता है शायद। एग्जैक्टली। उन लोग भी तो अंडर द हुड किसी का एपीआई यूज कर रहा है, उन लोग को भी पैसा वही देना ही। चैट जीपीटी चैट जीपीटी। दादा। हाँ ट्राई आउट कर सकता है, हमें सब बचा बचा के रख दिया, यूज ही नहीं करता है ट्राई कहाँ। आउट करके भी वो फायदा नहीं है। को पायलट अभी फ्री में दिया था, यूज किया 10 दिन, क्रेडिट खत्म। अभी अफसोस होता है कि भाई ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा है कोड। अरे यार आगे वो जीडीजी का सॉरी वो गिटहब का वो लेने से आपको मिल जाएगा ना फ्री में, 4 साल के लिए फ्री में। कॉलेज कॉलेज ये घटिया कॉलेज एक ईमेल प्रोवाइड कर भाई दे। हमको मिला था, तुम कांटेक्ट करो जाके, हमको तो मिला है। तुम और बिना बीसीए ईमेल का मिलता है। तुम बीसीए का है भाई, तुम्हारा टीचर लोग अच्छा है। भाई तुम तुम बीटेक जाके का है, यहाँ पे तुम मेरे 19 से लोग ज्यादा फीस अगर देता है, जाके यहाँ मांगो। पे 15 लोग हैं, अगर किसी भी टीम, मेरा नाम किसी को नहीं पता मुझे। जाके मांगो, मिलेगा। अरे नहीं देता, हम भी मांगा था जब ईमेल का नाम स्पेसिफिक सुना रीजन दे कि मांगो, डायरेक्ट इसलिए हम मना कर तुमको दिया। बोला कि भाई इंटर्नशिप कर लो यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके रीजन के हिसाब से मिल जाता है। पहले ही बोला था तुमको। हमको कनेक्शन थोड़ा बिठाना पड़ेगा, 1-2 आदमी है उन लोग को थोड़ा सा कुछ प्रोफेसर को पकड़ो, प्रोफेसर का थ्रो जाओ, मिलेगा, मिल जाता है। प्रोफेसर के थ्रू कोई प्रोफेसर मतलब है, 1-2 टीकन सर है एक, देन तुम्हारा अभिजीत सर है, इन लोग के थ्रू जाने से कर सकता है, लेकिन इन लोग से उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है। वही खराब है, करेक्शन हो जाए तो हो जाता है, लेकिन मिलता है। अभी उत्कर्ष को तो लगा ना, उत्कर्ष से भी लेके गया था वो आदित्य बिरला के लिए, उसके लिए। ओह नाइस। आदित्य बिरला के लिए उसको आईडी क्यों चाहिए, तो खुद का पर्सनल यूज के लिए लेके गया। वो लेकिन वो हम जहाँ से मतलब जो निकलवाते हैं ना आईडी, उनका नाम है गुणदीप सर, नाम है वो। इंदिरा मेरी का जो नीचे है ना ग्राउंड फ्लोर में उनका ऑफिस है, तो वहीं जाके कांटेक्ट करना होगा। तो हम उनको जाके पूछा था कि मेरा बारे में, मतलब मेरा उन लोग बंद कर दिया था ऑटोमेटिकली। तो वो बोला कि रीजन चाहिए, क्योंकि उत्कर्ष भी रीजन से निकला है। ओके, तो रीजन में क्या प्रूफ भी देना पड़ेगा क्या? हेलो हेलो, क्या हुआ? रीजन में प्रूफ भी देना पड़ेगा क्या? प्रूफ? प्रूफ मतलब ऐसे बस बता देने से हो जाता है, प्रूफ उसे दरकार नहीं होता है। हमको तो प्रूफ देने का दरकार पड़ा नहीं था, पर हम मतलब रिकमेंडेशन चाहिए कि भाई तुम्हारे प्रोफेसर को लिख के देना पड़ेगा कि इसको देना पड़ेगा आपको इस रीजन के लिए। प्रोफेसर लिख देगा तो कोई प्रूफ नहीं चाहिए। ठीक है, तब तो हो जाएगा, फिर तो इशू नहीं है। तो वही प्रोफेसर को करके पूछो, हो जाना चाहिए। क्योंकि डोमेन बोल रहा है, कॉलेज ईमेल से एक फ्री डोमेन मिल जाता है, तो डोमेन मिल जाएगा तो अच्छा है, फिर अपना पोर्टफोलियो होस्ट कर पाएगा उसमें। 2 डोमेन मिलता है, .me और .tech अच्छा, फ्री। पर लेना चाहिए .me, क्योंकि .tech का रिन्यूअल कॉस्ट ज्यादा है, अराउंड 1400 से 1500 है। अच्छा पहला साल के लिए फ्री मिलता है क्या? हाँ, पैसा के लिए फ्री मिलता है। .me सस्ता है, .me का रिन्यूअल कॉस्ट 350 रुपए आता है। कल हम GoDaddy पे लोग ले देख लेता रहा था है, एक। पर .tech में लेके फंसा देगी। 1500 रुपए देना पड़ेगा हर साल तुमको। अच्छा, कल हम GoDaddy पे देख रहा था, 1 रुपया दिखाया, उसके बाद जब पे करने गया 1000 रुपया दिखा रहा है। GoDaddy में होस्टिंग ले लो, होस्टिंग सबसे अच्छा है, या नेमचीप अच्छा है। GoDaddy का सर्विस भाई Spotify के जैसा एक डोमेन भी फ्री दे दो ना। मेरे पास पैसा नहीं है भाई, तुम भाई डिबेट में है। कल्याण भैया वो क्या एसएसएल सर्टिफिकेट वो सब क्या होता है?
वो तो वर्डसेल जनरेट करता है ना फ्रीली। वो तुमको अगर तुम होस्टिंगर से लेगा तो तुमको एसएसएल फ्री देता है, पर अगर तुम गोडीडी से लेगा, नेमटी से लेगा तो उन लोग तुमको एसएसएल फ्री नहीं देगा।